The clinical features of tuberculosis. What are the signs and symptoms of tuberculosis? जो इसकी sign and symptoms है, that may vary according to the age and health status of the children. But in some children, there are no sign and symptoms. जो इसमें common sign and symptoms होते हैं, that are chronic cough, low grade fever. These are the common sign and symptoms. Chest pain, loss of weight, anorexia, hemoptysis, and fatigue. These are the common sign and symptoms. जो patient होता है that is having chronic cough रहती है patient में, low grade fever, but low grade fever ही continuous रहता है, this continuous. Patient is having chest pain, patient में weight loss होता है, anorexia, loss of appetite होता है patient में, hemoptysis. Hemoptysis means blood with sputum. At the time of coughing, expectoration of blood. जब पेशेंट कफिंग करता है तो उस टाइम क्या आता है, ब्लड आता है, दैट इज नोन एज द हेमोप्टिसिस. या पेशेंट क्या हो सकता है, फैटीग. दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. After knowing the sign and symptoms, diagnosis is done. Or the investigations. Investigation is done to confirm the diagnosis. Investigations is done by various tests. इसमें बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं. मेनली इसमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, दैट इज द tuberculin test. Tuberculin test is this is Montauk's test. जो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट है या मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है, ये कैसे किया जाता है, इसमें ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है. इसमें ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज इंजेक्टेड, वो इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली. जो ये ट्यूबरकुलिन यूनिट होता है, इट इज ऑफ PDD. PPD. PPD stands for purified protein derivative of tuberculin. जो ये मॉन्टॉक्स टेस्ट है, इसमें क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसमें ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो इंजेक्ट किया जाता, इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली. लेकिन ट्यूबरकुलिन यूनिट जो होता है ये किसका होता है, इट इज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ ट्यूबरकुलिन. कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, इनटू द एंटीरियर फोरआर्म में. टू रेज द व्हील, इससे एक व्हील रेज हो जाता है. जो ये टेस्ट है इसका रिजल्ट जो है दैट इज रीड ऑन द थर्ड डे. इस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो रीड किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है ऑन द थर्ड डे में. यूजुअली आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद इसका रिजल्ट चेक किया जाता है. कैसे हम रिजल्ट चेक करते हैं, हम क्या देखते हैं इसमें, द टेस्ट इज रीड एज पॉजिटिव. टेस्ट पॉजिटिव होता है if there is swelling at least 10 mm in diameter. This confirms the diagnosis. अगर
स्वेलिंग होती है एटलीस्ट 10 मिलीमीटर इन डायमीटर में, दैट मीन्स कि जो ये टेस्ट है ये पॉजिटिव है. बट इफ द रेडनेस ऑफ द स्किन इज नॉट टेकन, this is not taken into consideration. Reaction जो होती है that is under, when it is under 5 millimeter in diameter, this is considered as negative. When the reaction is between 6 and 9 millimeter, this is considered as doubtful. By this ट्यूबरकुलोसिस इज कन्फर्म्ड. इसमें क्या है, मॉन्टॉक्स टेस्ट में पहले ही क्या किया जाता है, ट्यूबरकुलिन यूनिट जो है वो इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली ऑफ किसका ये होता है, ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव ऑफ ट्यूबरकुलिन. कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, इनटू द फोर आर्म में. उसके बाद इस टेस्ट का रिजल्ट जो है वो रीड किया जाता है ऑन द थर्ड डे, यूजुअली आफ्टर 48 to 72 आवर्स में. टेस्ट जो है वो कैसे हमें पता चलता है पॉजिटिव है, जब स्वेलिंग होती है एटलीस्ट 10 मिलीमीटर इन डायमीटर में. अब अगर क्या होगा, रिएक्शन होगी अंडर 5 मिलीमीटर, दिस कन्फर्म्स द टेस्ट इज नेगेटिव, पेशेंट इज नॉट हैविंग ट्यूबरकुलोसिस. अब अगर रिएक्शन होगी बिटवीन 6 and 9 millimeter, this is the doubtful, this is considered to be doubtful. In addition to this, in addition to Montauk's test, X-ray is done. इसमें एक्सरे भी किया जाता है, चेस्ट एक्सरे. चेस्ट एक्सरे किया जाता है to reveal the primary focus and pulmonary lesions. Also, smear from sputum is examined, or other lesions are examined for acid fast bacilli. This confirms the diagnosis. Firstly, main is the Montauk's test, another one is the chest x-ray is done, and smear for sputum is done to examine the acid fast bacilli. In addition to these, also CSF study is done. Cerebrospinal fluid is examined for the diagnosis of tuberculosis meningitis. Tuberculosis meningitis is confirmed by CSF study. After confirming the diagnosis, treatment is done. In treatment, the basic principles of tuberculosis control are early detection. These are the basic principles. Early detection or early case finding. Second one is the chemotherapy. Third one is the BCG vaccination and health education. These are the basic principles of tuberculosis control. First, you will see the early case finding. Early case finding में क्या किया जाता है?
जो फर्स्ट स्टेप होता है इन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में, जो फर्स्ट स्टेप है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में, दैट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑल केसेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ऑल केसेस। इसमें क्या किया जाता है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन किया जाता है बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, स्प्यूटम एग्जामिन किया जाता है किसे, बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से, ताकि जो भी कोई होगा ट्यूबरक्लोस पेशेंट होगा उनको हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें, उनको डिटेक्ट किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, अर्ली केस फाइंडिंग। Second one is the chemotherapy. Chemotherapy is the important one. Chemotherapy means drug therapy. This is the important one. This has completely revolutionized the treatment of pulmonary tuberculosis. It has completely revolutionized the treatment of tuberculosis. इसका जो objective है that is to achieve bacterial cure. जो इसमें current chemotherapy है that is based on multiple drugs. कीमोथेरेपी में बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, मल्टीपल ड्रग्स। शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी विद एडिशन ऑफ, इसमें शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी दी जाती है विद एडिशन ऑफ रिफैम्पिसिन, इथाम्बुटोल एंड pyrazinamide. Short course chemotherapy, short course chemotherapy with addition of rifampicin, ethambutol and pyrazinamide. To conventional drugs, that is with streptomycin and INH. जो इसमें शॉर्ट कोर्स से कीमोथेरेपी है दैट हैज रिड्यूस्ड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट फ्रॉम 18 months to duration has reduced from 18 months to 6 to 8 months. जो ये ड्रग्स है दैट आर प्रोवाइडेड इन पेशेंट विद बॉक्स वाइज, ये बॉक्स वाइज दिए जाते हैं। और जो ये केसेस है दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप कैटेगरीज, दैट इज कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड. दिस इज द कीमोथेरेपी. BCG वैक्सीनेशन. BCG वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, BCG स्टैंड्स फॉर बेसिली कार्मेट ग्यूरिन. इट्स अ लाइव वैक्सीन, ये एक लाइव वैक्सीन होता है. ये कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है, ये जो ये वैक्सीन है BCG वैक्सीन है ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम living attenuated
bovine strain of tubercle bacilli. BCG वैक्सीन जो है ये प्रिपेयर किया जाता है जो लाइव एटेन्यूएटेड बोवाइन स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरकल बैसिलाई होता है। जो इसका डोज है दैट इज 0.1 ml। लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं बिलो द एज ऑफ 1 मंथ, इन्फेंट्स होते हैं बिलो एज ऑफ 1 मंथ, जो इनका डोज होता है दैट इज 0.05 ml। जो ये वैक्सीन होता है ये दिया जाता है इंट्राडर्मली। वैक्सीन जो है ये दिया जाता है इंट्राडर्मली। किससे लेकिन दिया जाता है, इसके लिए एक सिरिंज होता है दैट इज नोन एज अ ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसके लिए अलग से सिरिंज आता है दैट इज नोन एज अ ट्यूबरकुलिन सिरिंज से ये दिया जाता है। इसके लिए कौन सी साइट जो है रेस्पॉन्सिबल है, इसके लिए मेनली जो यूजुअल साइट इंजेक्शन की है वो होती है जस्ट अबव द इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड ऑफ लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। दिस इज द BCG वैक्सीनेशन। ये सून आफ्टर बर्थ भी दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी। Another important last principle of tuberculosis control program is that is health education। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग ट्यूबरकुलोसिस दी जाती है। जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है दैट शुड बी डायरेक्टेड टू मोटिवेटिंग पेशेंट्स फॉर अंडरगोइंग रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप्स। हेल्थ एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड करनी होती है, डायरेक्टली पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी होती है जो होती है अंडरगोइंग, जो इसमें होते हैं अंडरगोइंग रेगुलर ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप, डिस्पोजल ऑफ स्प्यूटम एंड कोऑपरेशन विद एजेंसीज एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन में नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर कंप्लीट नर्सिंग केयर देना होता है, बैरियर नर्सिंग रखनी होती है, डिसइंफेक्शन ऑफ मटेरियल्स, बैरियर नर्सिंग, disinfection of materials and special disinfection procedures that are totally necessary. Special disinfection procedures are necessary. These are necessary. This completes the tuberculosis.